जब आप द बेस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग और इन्फ्लुएंशियल टेलीविजन शो या वेब सीरीज के बारे में सोचते हो तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? लेट मी गेस, इट वुड बी समथिंग लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स, ब्रेकिंग बैड, द सोप्रानोस, पीकी ब्लाइंडर, द वायर, हैनिबल, मनी हाइस्ट, पहले दो सीजन्स ऑफ नार्कोस एंड डार्क, जिसे पेंडेमिक के टाइम और भी ज्यादा रिकग्निशन मिला। लेकिन मिस्टर रोबोट के केस में थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट। ऐसा लगता है कि इसका कल्चर इम्पैक्ट sort of vanished in thin air despite being one of the best critically acclaimed show ever and creating a lot of buzz at the time it aired. But nowadays, you don't see a lot of people talking about Mr. Robot, and yet on the other hand, ऐसा एक दिन भी नहीं जाता होगा where you will find people not referencing and memeing about the series like Breaking Bad, Game of Thrones, and all that Sigma reels of Thomas Shelby. लेकिन वो क्या चीज है जो मिस्टर रोबोट को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेलीविजन शो बनाती है एंड व्हाई आई कंसीडर मिस्टर रोबोट टू बी वन ऑफ माय फेवरेट टेलीविजन शो एवर, जिसे मैं एक मॉडर्न मास्टरपीस भी कंसीडर करता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि टीवी शोज लाइक मिस्टर रोबोट आज के टाइम में बन सकते हैं, कम से कम करंट हॉलीवुड में तो नहीं। एंड आई विल कवर ऑल दिस थिंग्स इन दिस वीडियो, सो वॉच इट टिल द एंड। वेल, द वे आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू मिस्टर रोबोट इज सर्टेनली डिफरेंट। मुझे आज भी याद है जब मैं टीवी पे WWE रॉ देख रहा था, तब स्क्रीन के नीचे एक प्रमोशनल वीडियो चल रहा था मिस्टर रोबोट का, एंड फॉर सम रीजन आई गॉट क्यूरियस एंड गूगल अबाउट दिस टीवी शो ऑन द इंटरनेट, एंड दैट टाइम एपिसोड 1 वाज ऑलरेडी आउट। तो फिर मैंने भी एपिसोड 1 देख लिया, and boy, I was instantly hooked to this TV series. I mean, that Krista and Elliot's therapy session scene at the beginning of episode 1 was enough to sell me on this one. और जैसे मैंने एपिसोड पूरा देख लिया, I had this feeling that this TV series gonna be something special, and I'm glad to be right about this one. Mr. Robot का पहला सीजन 2050 में एयर होता है और ये टीवी सीरीज एंड होती है विद इट्स फाइनल सीजन, सीजन 4 इन 2019 विद लास्ट एपिसोड एयर्ड ऑन 22 दिसंबर 2019। मुझे अच्छा लगा कि क्रिएटर्स ने स्टोरी को बेवजह स्ट्रेच नहीं किया एंड इट एंडेड राइट वेयर इट नीडेड टू बी। एंड पर्सनली आई वांट दिस ट्रेंड टू हैपन इवन मोर ऑफन, क्योंकि बहुत सारे टीवी शोज, वेब सीरीज और एनिमे सफर्स फ्रॉम नीडलेसली स्ट्रेचिंग द स्टोरी, बट आई डाइग्रेस। You see this TV series from the POV of Elliot Alderson, जो इस TV series का मेन कैरेक्टर है और not so reliable narrator भी। Elliot works for the cyber security firm जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है E Corp को, या should I say Evil Corp को। But as a side job, Elliot hacks everyone around him. Well, most of the time they turn out to be bad people, जिससे वो निर्बल और जरूरतमंद लोगों को प्रोटेक्ट करता है from these bad peoples by hacking and sending them to the jail. फिर एक दिन एलियट सबवे ट्रेन में मिस्टर रोबोट से मिलता है, who offers him to join his vigilante hacker group F Society, जिनका एम है लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट इन द वर्ल्ड ई कॉप को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि ई कॉप चलाने वाले टॉप 1% कंट्रोल्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो आफ्टर डिस्ट्रॉइंग ई कॉप, मिस्टर रोबोट एंड हिज ग्रुप ऑफ हैकर्स वांट टू ब्रिंग द बैलेंस टू द वर्ल्ड एंड मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस अगेन। सो दैट्स द जिस्ट ऑफ द फर्स्ट एपिसोड। लेकिन जैसे ही स्टोरी प्रोग्रेस होती है, इट गेट्स इवन मोर कॉम्प्लेक्स एंड लेयर्ड, क्योंकि ये उन टीवी शोज में से है वेयर ऑडियंसेस फुल अटेंशन इज ट्रूली रिक्वायर्ड, बिकॉज ये टीवी शो आपको सटल वे में बहुत सारे हिंट्स देते जाएगा एंड यू विल थिंक दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन, but you can easily miss that because this TV show intentionally hides a lot of relevant information from the audience and keeps them in the dark for the most time. And this one of the things about this TV show जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों ने बहुत सारे टीवी शोज, मूवी या एनिमे देखे होंगे जो फोर्थ वॉल ब्रेक करते हैं, लेकिन मिस्टर रोबोट का फोर्थ वॉल ब्रेक करने का तरीका थोड़ा यूनिक है। There is a scene where something major happens और उसके बारे में एलियट को पता नहीं होता, लेकिन जब उसे इसके बारे में पता चलता है, then he suddenly asks the audience that why didn't you tell me about this? भाई माना तो पड़ेगा, this sort of things rarely happens in movies और टीवी सीरीज। और हाँ, जितने भी थेरेपी सेशंस के सीन एलियट और क्रिस्टा के बीच में होते, वहाँ पे फोर्थ वॉल ब्रेक करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। Well, along with virtuous hacker group F Society जो evil corp को टेक डाउन करना चाहते हैं, then we also got evil hacker group Dark Army जिसका या जिसकी लीडर व्हाइट रोज है, और ये ग्रुप किसी कल्ट से कम नहीं। दिस ग्रुप कैन हैक एनीवन, किल एनीवन एंड डिस्ट्रॉय एनीवन डिपेंडिंग ऑन इफ दैट्स व्हाट देयर लीडर व्हाइट रोज वांट्स। और भाई बीडी वोंग ने क्या परफेक्टली व्हाइट रोज के किरदार को प्ले किया है। व्हाइट रोज मोस्ट प्रोबेबली विल बिकम वन ऑफ योर फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम दिस शो एंड पार्ट ऑफ द क्रेडिट गोज टू बीडी वोंग्स परफॉर्मेंस एज व्हाइट रोज। लेकिन हाँ, जितने भी डार्क आर्मी के सीन्स है वो सारे के सारे जबरदस्त थे
I mean, there is not a single dull moment when Dark Army is involved. Whenever they comes on the screen, the intensity level just gets skyrocketed. मिस्टर रोबोट ये ऐसी टीवी सीरीज में से एक है जिसकी रिवॉच वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। आपको इस टीवी सीरीज में बहुत सारे ऐसे सीन्स या मोमेंट्स मिलेंगे जो आपको बार बार देखने पर मजबूर करेंगे, और ऐसा सिर्फ प्लॉट ड्रिवन एपिसोड में नहीं बल्कि बहुत सारे सेल्फ कंटेंट एपिसोड्स में भी आपको ये देखने को मिलेगा। मेरे फेवरेट मोमेंट्स तो वो है जहाँ एलियट का लंबा मोनोलॉग चले ही जाता है, जहाँ पे वो पॉलिटिक्स, सोसाइटी और ह्यूमन नेचर पे ट्रूथ बॉम्ब्स ड्रॉप करता है। एंड देन हु कैन फॉरगेट दैट गॉड स्पीच एपिसोड, इट्स प्योर गोल्ड। हाँ, अगर आप मिस्टर रोबोट देखना चालू करते हो देन यू विल नोटिस दैट इट टेक्स ह्यूज इन्फ्लुएंस फ्रॉम फाइट क्लब, और ये इस बात को मिस्टर रोबोट कभी छिपाता भी नहीं। In fact, this show uses this to its advantage. This TV show has so many 10 out of 10 episodes. In fact, बहुत से एपिसोड तो आपके पर्सनल फेवरेट्स बन जाएंगे, जैसे कि सीजन 2 एपिसोड 3 कर्नल पैनिक। ये वही एपिसोड है where that God speech happens and other disgusting things also. यार उस उल्टी को देखकर तो मुझे भी उल्टी आने लगी थी। Then there is Imagine a World Gone Insane, which is a parody episode of American sitcom. Man, I really love that sitcom intro of Mr. Robot. That shit was epic. But there is a one episode जो मैं कभी revisit करना नहीं चाहूँगा, and that episode is Proxy Authentication Required. This episode just broke me, and I never want to feel something like that again. There was a reason that this episode one time had a perfect 10 on IMDb's highest television episodes. Well, now it sits at 9.9, still a well-deserved score nonetheless. Well, Mr. Robot की story तो top tier है ही, लेकिन what makes this TV series so rewatchable is the character themselves और उन characters को play करने वाले सभी actors की बेहतरीन acting performance. I mean, एक भी actor आपको miscast feel नहीं होगा। मेन कास्ट तो है ही, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट ने भी बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस दी है। जस्ट लुक एट द मेन कैरेक्टर ऑफ द शो, एलियट ऑल्डरसन प्लेड बाय ramimalek। मैं इनकी एक्टिंग की जितनी भी तारीफ कर सकूं उतनी कम है। He made Elliot Alderson one of my favorite fictional character of all time. Before Mr. Robot, I knew him from those god-awful Twilight movies and also from NFS movie. Yes, it exists. NFS में रामी मलिक एक कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर प्ले करते हैं, which is good in itself, but his performance as Elliot Alderson gonna stick with you forever. फिर आती है Angela, who is my least favorite character from the main cast, but to be fair, her character does improve a lot in later seasons. So after Angela comes Darlene, who is my personal favorite female character from Mr. Robot. The show did justice to her character, plus there are some episodes that solely focus on her dealing with some fucked up situations. मैं डार्लिन के बारे में ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि there is a huge plot reveal regarding her and Elliot in season 1 जो मैं spoil नहीं करना चाहता. Then there is Mr. Robot played by Christian Slater. He is a fun character with mysterious aura. Well, Mr. Robot में हर नए सीजन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसमें से पहला कैरेक्टर है रे played by Craig Robinson. Yes, the Doug Judy from Brooklyn Nine-Nine himself is in Mr. Robot. Then there is a Seinfeld guy, Leon, played by Joey Badass. Yup, that's his real name. भाई नाम हो तो ऐसा, नाम में भी badass. Leon becomes instantly likable character, mostly due to the badass performance given by Joey Badass. And then there is badass competent FBI agent Dominic DiPerio. She is a great addition to the show. और फिर सीजन 3 में मिस्टर रोबोट इंट्रोड्यूसेस डार्क आर्मी ऑपरेटिव Otto Irving, played by Bobby Canwell, who is one of my personal favorite side character from this show. फिर आते हैं E-Corp CEO Philip Price, played by Michael Christopher. He is one of the most badass character in this show. Yes, even more than Leon. और क्या तगड़ी डायलॉग डिलीवरी है यार इस कैरेक्टर की. You'll love it when you see it. Well, other important characters में से I really like Tyrell Wellick. He is the wild card of the show, and I wish we got to see more of him in later seasons. But I'm happy with what I got. And who can forget Dark Rose, whom I already mentioned. Well, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स है और सभी के नाम लेना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि ऐसा करूंगा तो वीडियो छोटा पड़ जाएगा. So I'll just skip that part. Well, किसी भी स्टोरी की एंडिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है. It really makes or breaks the story. Just go and ask Game of Thrones fans how was the season 8. और फिर recent example में Attack on Titan आता है, which delivered the ending that divided the fandom.
There are fans who loved it and defends it till the end, and then there are fans who absolutely hates the ending to the core. And I'm glad to say this that Mr. Robot delivered a great ending. The big reveal at the finale was mind blowing. मैं usually तो ये नहीं कहता, but it will give you goosebumps. I mean, it is the second highest rated episode of Mr. Robot on IMDb. But yes, there are some fans who has mixed feelings about the ending. But if you ask me, then personally, I really love the ending. For me, the ending really fits well with the story और मुझे नहीं लगता कि इससे भी अच्छी कोई ending हो सकती थी. I'm really satisfied with the ending and I think it answered everything that it needed to be while leaving something to audience imagination. Well, finally यही कहना चाहूँगा कि it's a great TV show that you shouldn't miss. ये उन टीवी शोज में से है जिसे आपको मरने से पहले एक बार तो देखना ही चाहिए. So go and watch it. Well, that's it for this video. I will see you in the next one. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड सायोनारा.